Hello everyone, hope you all are fine. Today in this video, we will learn JavaScript expressions and ES6 template laterals. Okay, so without wasting any time, let's look at the code. Suppose मैं यहाँ पर एक const declare करूँगी. Const first and last name is equal to Akansha Chauhan, and I will write my name is फर्स्ट एंड लास्ट नेम. तो आप सोचो क्या आउटपुट होगा. ओके, सो लेट्स सी द आउटपुट. सो दिस इज नॉट व्हाट वी वांट. सो व्हाट वी हैव टू डू टू गेट द प्रॉपर आउटपुट. सो बेसिकली ये एक HTML एलिमेंट है, बट हमें इस HTML एलिमेंट में JavaScript यूज़ करना है. सो विद द हेल्प ऑफ curly braces we can use JavaScript inside an HTML element, and this is the best part of JavaScript. Like if I use curly braces here, so you can see the proper output. My name is Akansha Chauhan. Okay, and we can do more here, like we can calculate something here and you can see the output also. Suppose I will write H2 and I will write addition of 5 plus 5 is equal to, so I can do like this, 5 plus 5. So you can see the output. Addition of 5 plus 5 is equal to 10. So this is the JavaScript. So we can also do minus, and I will remove this. You can see the output 0, and for multiply you can see 25. So we can also do one more thing like this. I will write my favorite number is math dot random. So you can see मुझे कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हुआ मिलेगा. तो मैं यहाँ पर एक और कॉन्स्ट डिक्लेयर करूँगी. कॉन्स्ट चैनल इज इक्वल टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, so this is the first way to write JavaScript. तो अब हमारे पास मल्टीपल कॉन्स्ट है, तो अब हम इसे कैसे यूज़ करेंगे. सो आई विल डू वन थिंग, लाइक आई विल यूज़ curly braces and write channel. So you can see the output. My name is Akansha Chauhan. Please subscribe my channel. So this is the first way to write JavaScript. If you have multiple const, then you can write like this. Okay, so another way is concatenation. So in concatenation we can do like I will use plus. So you can see the output. इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है. इसके बीच में स्पेस लाने के लिए हम कुछ इस तरह से कोड लिखेंगे. सो नाउ यू कैन सी द स्पेस बिटवीन देम. ओह सॉरी, यू कैन सी द स्पेस बिटवीन देम नाउ. ओके, सो थर्ड वे इज टेम्पलेट laterals. So whenever we use template laterals, we have to use backticks instead of single or double quotes, and with that we will now use dollar. With dollar there will be curly braces, and inside curly braces we will define the name of our const like this. So I will remove this. Now I will use curly braces, and these are the backticks. Here I will write my name
is with dollar, first name, last name, and again dollar, channel. Okay, so now I will save it. And you can see my name is Akansha Chauhan and please subscribe my channel. तो गाइस यही है हमारा टेम्पलेट लेटरल्स. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.